Namaste ji, namaste. Welcome to part 2 of CLAT Legal Aptitude practice. And before starting, please अपना दिमाग और अपनी common sense अपने पास रखेंगे इन questions में only and only the principle works. Without wasting any time, let's start. And you may be hearing some barking dogs behind me because I'm not working in a studio, so please ignore that. Question number 11, because part 1 to 10 is in the earlier video. If you haven't watched that, please do. Sale of liquor is illegal. Good enough. All agreements relating to prohibited items do not exist in the eyes of law. तो वो कह रहा है कि कानून की आंख में भैया ये एग्रीमेंट है ही नहीं. किसका? जो इलीगल आइटम है. फैक्ट क्या दे रहा है? A entered into an agreement with B for the sale of liquor. तो ये agreement does not exist in the eye of the law. That's why उसने आपको ये फैक्ट बताया. A failed to supply the agreed quantity of liquor to B. Okay. अब आंसर्स भी देख लेते हैं. B can bring a legal action against B. Why will he basically bring a legal action against himself? बड़ा ही मजाकिया ऑप्शन दिया है. A can bring a legal action against B. नहीं, कोई भी लीगल एक्शन होगा ही नहीं क्योंकि दिस एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. B cannot bring any legal action against A. This is most like the correct one. And fourth is A and B can initiate. पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, छोड़ो. Question number 12. Principle. Nothing is an offense which is done by a child. Nothing जब बोल दिया मतलब कुछ भी कवर हो गया उसके अंदर. By a child under 12 years of age. Okay. Who has not attained sufficient maturity of understanding. इसका मतलब ये अभी तमाशा करेगा इसी फैक्ट को लेके. To judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. Facts. Himesh, 11-year-old boy. तो 12 से नीचे चला गया. That is satisfying the first part of our principle. Picks up a gold ring worth rupees 5,000. Lying on a table in his friend's house and immediately sells it for rupees 2,000 and misappropriates the money. Basically, over smart बच्चा है. He knew exactly what he was doing. He knew the repercussions and he knew the consequences of his conduct. तो principle में वो जो बोला था nothing is an offense, he basically gets saved from that and it becomes an offense now because second condition नहीं fulfill हुई इसके अंदर. अगर मान लेते हैं कि ही पिक्ड अप द गोल्ड रिंग, जस्ट केप्ट इन हिज पॉकेट एंड अपना आराम से वो घर चले जाता तो हम कह सकते थे इट वाज नॉट एन ऑफेंस. बट यहाँ पे तो ये क्लियरली ऑफेंस हो गया ना. बेच के खा गया वो तो उस रिंग को. ऑप्शंस पे देखते हैं. हिमेश वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज स्टीलिंग इज एन ऑफेंस. ऊपर कहीं स्टीलिंग की बात करी उन्होंने? नहीं करी ना. इस ऑप्शन को डस्टबिन में फेंको. Himesh would be protected under principle because he's below 12 years. No. But second condition तो fulfill नहीं हुई तो फिर यहाँ पे दिक्कत है. ऑप्शन नंबर 3 तो इसलिए इसको भी डस्टबिन में डालना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर 3, Himesh would be protected under principle because his acts show that he was not sufficiently. His acts actually show that he was very sufficiently mature. तो इस ऑप्शन पे भी हम हंसेंगे. And let's place our heart वाला emoji on option number 4 because he will not be protected because his acts show that he was sufficiently mature. यहाँ पे बिल्कुल ही दिख रहा है कि चोर भाई साहब थे और उनको exactly पता था कि उनको पैसा कमाने. Question number 13. One who dishonestly misappropriates. Keyword dishonestly or converts to his own use or sells is a keyword here. Any movable property. That means wallet or a lamp or a watch or anything belonging to another is guilty of the offense of misappropriation. Very good. Facts. A takes property belonging to Z out of Z's possession in good faith. Okay. Believing when he takes it that the property belongs to himself. Full stop. ऊपर कहीं good faith की बात कर रहा है ये प्रिंसिपल के अंदर. ये आपको यहाँ पे घुमाने के लिए इसने ये फैक्ट दे दिया. Subsequently A on discovering his mistake, अब A भाई साहब को पता चल गई है. Without disclosing the actual facts, dishonestly sells the property to a stranger. अच्छा, अब तो ये भाई साहब ओवर स्मार्ट हो गए और अब सब कुछ पता लगने के बाद ही took advantage of the situation. Has he sold the movable property? Yes. Therefore he is guilty of the offense of misappropriation. अब सीधा साधा वो वाला ऑप्शन देख लो जहाँ पे guilty दे रखा है. That's option number 2 and laugh at all the other options. I'm not even going to read those. Question number 14. Principle. Letters or words not describing quality of things can be registered as a trademark. Alright. Before now coming to the fact, please do not use your common sense or knowledge of the law. Facts. Ram made an application for registration of alphabet. B.
written in a fancy style as trademark to be applied on packets and cartons of shoes manufactured by him. Okay. आंसर्स में देखते हैं. अब आपके हिसाब से क्या है, कैन इट बी अलाउड और कैन इट नॉट बी अलाउड? मैं आपको बताऊँ, रियल लाइफ लॉ में इट वोंट बी अलाउड, बट हमने रियल लाइफ लॉ, अपनी अक्ल, कॉमन सेंस, IQ सब पीछे छोड़ना है, प्रिंसिपल को देखना है. लेटर और वर्ड्स नॉट डिस्क्राइबिंग क्वालिटी ऑफ थिंग्स कैन बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क, तो इट कैन बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क. वो वाला ऑप्शन ढूंढ लो और बाकी वाले ऑप्शंस पढ़ के हंस लेना, बिकॉज वो सारे के सारे गलत हैं, जबकि रियल लाइफ में कुछ और है. बट वी विल स्टिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू द प्रिंसिपल. जैसे कि जज साहब कहते हैं जॉली LLB में कि जी मैं तो एविडेंस की वेट करते ही रहता हूँ और कुछ हो नहीं पाता. तो वैसे ही द जज हैज़ टू स्टिक टू द लॉ. Even lawyers have to stick to the law. That's why they're asking you these questions to test your aptitude of whether you are eligible to study for law or not. Question number 15. Principle. Defamation is the publication of a statement which tends to lower reputation of a person. So publication is the keyword कि publish होगी in the estimation of other members of the society generally. Good. Facts. A writes a highly offensive and derogatory letter about B and sends it directly to B in a sealed cover. ना तो इसने अखबार में छपवाया वो लेटर, ना व्हाट्सएप पे भेजा. Neither did he tell the members of the society about this. Therefore, it never got published. And therefore, it is not defamation. Let us look at the options. Look at option number 2. A is not liable to be for defamation since there is blah 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 and blah. तो जो A is liable for defamation है, वो सारे के सारे ऑप्शंस को पहले ही काट दीजिएगा, क्योंकि पब्लिकेशन हुई ही नहीं सोसाइटी में. किसी और को तो पता नहीं चला ना, उन दोनों ने आपस में गालियाँ दी, और तो गाली दे के वो B वाला जाके उसको मार पिटाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डेफेमेशन नहीं हुई, तो हमने अपने प्रिंसिपल के साथ चलना है, और उसके आजू बाजू लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे हमें कोई लेना देना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16. प्रिंसिपल. एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द alleged facts is relevant. Okay. Whether they occurred at the same time and place or at different times and places. So existence of all the alleged facts. सारे के सारे इसने कवर कर लिए. Facts देखते हैं. A citizen of England is accused of committing murder of B in India by taking part in a conspiracy acted in England. Alright, so all of these facts are relevant because even if they are in different times and different places, these facts will remain relevant because the principal is saying so. So look at the options. Only the fact that A citizen of England is accused of committing murder of B in India is relevant. But then इसमें conspiracy missing है ना, because conspiracy hatching is also one fact. Then second one, A citizen of England cannot be tried in India. कहाँ बोल रहा है प्रिंसिपल में? हमने अपनी अक्ल नहीं लगानी, कॉमन लॉ की नॉलेज हमने अपने पास रखनी है, हमें वहाँ पे नहीं जाना है. इस ऑप्शन को पहले ही उड़ा दो. ऑप्शन नंबर 3, ओनली द फैक्ट दैट A is accused of conspiracy hatched in England is relevant. भैया वो सिटीजन वाले फैक्ट का क्या हुआ? Because our principle is saying existence of all the alleged facts is relevant. Therefore, option number 4 is correct. The fact that a citizen of England, I'm not going to read it out. Every fact is covered there, and therefore it is the correct option. Question number 17. An agreement without free consent can be enforced only at the option of the party whose consent was not free. तो यहाँ पे अभी जोर ज़बरदस्ती होने वाली है. Fact. A obtains the consent of B to enter into an agreement. Good. By putting a gun on the head of B's girlfriend. Not so good. अब यहाँ पे वो कौन सी पार्टी है जिसका consent नहीं है? B. So only on his option can this contract be enforced. So only B can enforce the agreement. And that is the correct option. Option number 1. Question number 18 पे आते हैं. Acceptance of proposal must be the exact mirror image. यानी सेम टू सेम होना चाहिए जो बात बोली गई थी. अगर वो वहाँ पे आगे एक्सेप्ट हुई तभी proposal will be accepted. Facts. A made a proposal to B to sell a chair for ₹500. ठीक रेट दे रहा है. B expressed a desire to buy the said chair for ₹400. अरे ये तो डिफरेंस आ गया. It is not a mirror image. Therefore, this is not acceptance of a proposal. Option number 1. It is not clear whether. How come it is not clear? It is very clear. Option number 2. B has accepted the proposal of A. No, he hasn't. Option number 3. B has not accepted the proposal of A. Yep, he has not. Option number 4. Formality's sake, it is not clear whether B has accepted. Arey bhai, it is clear. And why do I keep discarding the options so fast? Because this is how fast that you have to be in the exam as well. नहीं तो सारे के सारे मैथ्स वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? Question number 19. Principle. Mere silence as to facts likely to affect the decision of a person to enter into a contract is not fraud. Okay? तो चुप रहना fraud नहीं है. Fact. A sells to B A's daughter who is a minor
अच्छा, अपनी ही बेटी से पेमेंट ले ली जी इन्होंने. अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड. पागल घोड़ा बेच के. गुड, व्हाट अ फादर. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स. अब प्रिंसिपल में क्या दिया है? मियर साइलेंस. मियर साइलेंस आ गई. इज इट अ फ्रॉड? नो, इट इज़ नॉट अ फ्रॉड. अब ऑप्शन देखें. बी कैन टेक प्ली ऑफ फ्रॉड बिकॉज ही इज माइनर. प्रिंसिपल में कह रहा है कुछ माइनर के बारे में, नहीं कह रहा ना. फैक्ट्स में कह रहा है, भूल जाओ. प्रिंसिपल में कुछ दिया होता तो हम माइनर के एस्पेक्ट में सोचते. फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे. देयर कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ फादर एंड डॉटर. कुछ कह रहा है प्रिंसिपल में ऐसा? नहीं. थ्रो इट इन द डस्टबिन. ऑप्शन नंबर 3. ए हैज़ नॉट कमिटेड फ्रॉड. मोस्ट लाइकली 1. ऑप्शन नंबर 4. ए हैज़ कमिटेड फ्रॉड. No. That's a funny option given the principle. So option number 3 is the correct one. Question number 20, the last one for this video because I only make 10 questions in one go, क्योंकि इससे ऊपर बनाएंगे तो आप सो जाएंगे और ना हमें रियल लाइफ में ज़्यादा सोना है और ना हमें एग्जाम में. तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली नॉर्मल, मतलब जब वो साहब बिल्कुल नॉर्मल होश में होते हैं, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड. Good. So basically when he's normal, he can make a contract. Facts. A generally remains in the state of unsound mind and rarely becomes capable of understanding the things. So he can basically make a contract when he becomes capable of understanding the thing at the rare occasion that he does so. Okay? Answers. A can make a contract when normal. Yeah, sounds good enough. Option number 2, A can make a contract only for his own benefit. कहीं लिखा है प्रिंसिपल में own benefit? No, throw it in the dustbin. दिमाग नहीं चलाना है. Option number 3, A can never make a contract. क्यों भैया? उसने ऊपर बोला हुआ है ना, when he's not of an unsound mind, he can make a contract. Then option number 4, A can make a contract at any time, whenever he pleases. कहीं लिखा है प्रिंसिपल में? No, throw it in the dustbin. And that's about it for 10 questions. Thank you so much for watching. Obligatory YouTube dialogue of like, comment, share and subscribe. Take care and all the best for your exam. Study hard and see you soon.